عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today's lesson is going to be quite different from the previous ones because Alhamdulillah, we have reached a certain capacity of translation, Alhamdulillah, from our previous lessons. And inshallah, today we will be translating directly from several passages of the Quran. Inshallah, it was a very difficult decision to make at this point because we haven't done like more than 10 lessons. And a natural question is that how can someone get capable of understanding the Quran only after attending lessons around 10 or 12 hours. So that's what I am going to prove that it's possible, inshallah. Some instructions you have to follow anytime you don't understand something. Please note it down. Okay, note it down or ask me straight away at the same point. Okay, don't wait for the end of the paragraph. Okay, that let Aga finish the paragraph and then I'll ask a question. No, that's not a good way. When you ask questions on spot, it helps others to understand as well. Okay, and the second thing is that if that question would not be very relevant or very important to answer at that time, inshallah, I will send you answers on our WhatsApp group or either on our private chat. Okay, because many people are like it's not useful for them to know each and everything, right? For example, our students who are at level A, they have just started this thing. They would not be more interested in mansoob, majroor, and things like those. Okay, so the main purpose of this course is to minimize the stress and burden of grammar and understanding words on their own. जब हम अल्फाज को एक एक करके हम उनके मायने को समझने की कोशिश करेंगे तो जुमले खुद ब खुद बनते जाएंगे. Sometimes it happens that a sentence is difficult to understand, but if you take words, each and every word at a time, then it becomes very easy to translate and understand, and you can fill in the gaps between. So this is not the first time that the Quran is being more of like it has got Arab already. कुरान में एराब पहले से लग चुके हैं, इसके तर्जुमे हो चुके हैं, इसकी ग्रामर जो है अरबी की मुरतब की जा चुकी है. So you don't have to reinvent the wheel. Just follow the course, inshallah, and you will be able to grasp many things, inshallah. There may be some things that you are not able to understand at a particular time, but inshallah you will reach that level if you keep on working with commitment and concentration. So inshallah, let's start the first part of the surah. This surah is Suratul Mominoon. Suratul Mominoon is the first surah in Juz 18. And this was a very difficult decision to make because when you are translating a surah or you are going continuously in a certain paragraph, there may be words that are very difficult to understand or to make understand. So inshallah, I'll try my best today on this paragraph. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العلي العظيم. Inshallah, let's have a look at word to word for this surah and for the first paragraph. So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ means I seek a refuge. Billahi means with Allah. I seek Allah's refuge. Minash shaitan, from the Satan. Min means from. Ash-shaitan means the Satan. The shaitan, ar-rajim, who was accursed. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah. Ba means with the name of Allah. So here they have written in the name of Allah, but this is because of the English, the convenience in English, right? We have already discussed many times that particles are used, they are translated tentatively, like they have fixed meanings in themselves, but one of those meanings is used. Okay, so this is with the name of Allah. Ar-Rahman is the sifat awal, Ar-Rahim is the sifat thani. So these are the adjectives of Allah, also the names of Allah, Ar-Rahman and Ar-Rahim. Ar-Rahman means the
the beneficent to all. Here they have written the most gracious. So you can do the word to word translation according to the tafsir as well. Like it's about Rahman and Rahim. What's the difference between Rahman and Rahim? So Rahman is the one who benefits all. Rahim is the one who benefits the mu'mineen with certain things. Another meaning for this is Rahmanu fid dunya wa Rahimu fil akhirah. So Allah is Rahman, He gives to everyone. He doesn't um, He gives thanks to everyone, either it's a mu'min or a kafir. But in the akhirah, He would only give the mu'mineen their perks. So inshallah, Ar-Rahman and Ar-Rahim are clear. The surah starts with qad. Qad means indeed. You can observe that in blue color, blue ink. Aflaha. Aflaha. Aflaha means he they aflaha really means he is successful. But this word is from babe if'al. Aflaha, right? Aflaha yuflihu, right? So here we have the word aflaha with mu'minun. So it is possible to use a singular verb, a singular fail with a plural noun. अफलाह मुमिनून उर्दू में कहेंगे बेशक पद यानी बेशक अफलाह यानी फलाह पा गया ओके अल मुमिनून यानी मुमिन मुमिन फलाह पा गए अब आप इस बात से वाकिफ हैं कि वाव नून जिस इसम के आगे हो ये हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था इसको कि वाव नून जिस भी इसम के आखिर में होगा तो वो इसम हो या फेल हो ये प्लूरल के मायने देता है जमा के मायने देता है आमतौर पर जमा मुजक्कर के मायने देता है So, al-mu'minuna, the believers, qad aflaha al-mu'minuna, indeed the believers are successful. But they have changed the tartib according to the English context, right? The believers, indeed the believers are successful. The word are here is a form of verb to be, which has to be put in because there are no forms of to be in Arabic. Al-ladina, it's very simple, those who. Hum means they. Fi salatihim, in their prayers. Salat means prayer. Salatihim, we have studied this in our last lesson. Salatuhum or salatihim. Fi salatihim jar majroor, right? Salat is jar and him is also majroor because of fi. Fi salatihim, in their prayers. Khashi'una, they are humbly submissive. To be humbly submissive or to fear something, right? Khushu is also a fear. Walladina, and those. Hum, they. Hum means they. Anil lagwi, jar majroor. An is harf jar. Al-lagw is majroor. So harf jar is a preposition. It means from. An means from or about. We have already studied in the word series. Anil lagwi, from the vain talk. Al-lagwi, from the vain talk. यानी लघु बातें, फालतू बातें, बुरी बातें, right? फालतू बातें ज्यादा इसका सही तर्जुमा है वेन टॉक, फजूल बातें. मुअरिदून, we have studied in our first lesson words starting with mim dhamma. Mim dhamma, it's like they are either ism fa'il or ism maf'ul in the abwab. Mu'riduna is ism fa'il because of this kasra here below the ra. Mu'riduna. If it was mu'raduna, then it would be ism maf'ul. So the translation makes wallazina, and those whom they are, and those who are or they are anil lagwi, about the vain talk. Mu'ridun, they turn away. Ain ra dad. Ain ra and dad are the root letters. Mu'rid is ism fa'il, and a'rada yu'ridu, mu'radun or mu'ridun, right? And the plural is mu'riduna. Next ayat, wallazina, and those who. So wow means and, alladina means those who, hum means they, hum means they. So the word to word translation is hum means they, but here the English context would be those who, alladina hum, those who. Lizzakati, lizzakati. So we discussed before, lam kasra li is, it means for. Az-zakati, the kasra on ta'i marbuta is because of lam harf jar. So liz zakati is jar majroor muta'alliq hum. This is jar majroor about hum. And then liz zakati.
So zakat word means alms and charity. For their zakat, for their zakat. Fa'ilun. Fa'ilun means doer. Fa'il means doer. So they do that. What do? They always pay the zakat. So liz zakat. So the word hum is again a ta'kid for fa'iliyat zakat. Hum is again a ta'kid for fa'iliyat zakat. Like they always pay their charity. They always pay their zakat. They never miss out on their zakat, right? It means like that. Okay. وَالَّذِينَ hum, and those who, again hum is a ta'kid here. If it was a without a hum, the sentence would also be correct at that time as well. الَّذِينَ hum. Now, لِفُرُوجِهِمْ. Li means for, but here it is translated of. Again, it's a particle. It can be translated according to the context and according to the target language, right? So لِفُرُوجِهِمْ. Li means anyone? Okay, now this is time for your interaction, inshallah. Please unmute your mics if you don't have background noises. Please unmute your mic and let's start doing this one. जी कौन इसमें इंटरेस्टेड है इंशाल्लाह शुरू करते हैं अस्सलाम वालेकुम आपने ली के बारे में पूछा ना जी ली मींस इट्स अ हर्फ for what's the meaning as for furujihim furuj Sister Saida, please carry on with the translation. अच्छा furuj means private parts, right? yes Farj, or him is them. Okay, and him is them. So their private parts, furujihim, their private parts. It's a mudaf mudaf ilayh, right? Furujihim, mudaf mudafun ilayh, and this is li furujihim, about their private parts or for their private parts. Hafizuna, Sister Saida. Hafizuna, इसलिए because it's ending with y or wow and nun. It's a plural, and hafiz is guardians. So, guardians. So it means they are. It means they are guardians, but we don't write they all the time, right? They are guardians. So about so for their private parts, they are guardians, and the word hum suggests that this is a for about the plurals, of course, and this is a ta'kid, like they are always hafizun on their furuj. Okay, ahsanti, mashallah. Yes. Anyone else for the next ayat, please? It's very simple. थोड़ा सा हिम्मत करें इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है. अस्सलाम वालेकुम. आइए. Okay. ये accept. Illa means except. ahsanti. Ala azwajihim. Ala upon. अज़वाज ये तो वाइफ्स हो गए और होम वो हो गया प्रोनाउन उनकी from. जी their wives. Azwajihim means their wives. Now this azwaj is a noun. This is a plural. Zawj की जमा azwaj. Zawj यानी जोड़ी, pair, a pair, 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 and zawj की जमा होता है, the जमा for zawj is azwaj. Ala azwajihim. So here they have written wives, but you can write here spouses. Okay, because it's not only about men. The surah is not only about men. It's also about women. Okay, when we say qad aflaha al-mu'minun, so mu'minun also includes mu'minat in them. It's not only about a surah about men. Okay, so here we can write wives. Here we can write spouses. Ala azwajihim. Azwajihim, again mudaf mudafun ilayh. Azwajihim, their wives. Ala azwajihim, upon their spouses. ये मुदाफ इले इसी में आएगा. ये मुदाफ कौन सा होगा, इसका हिस्सा और कितना होगा मुदाफ इले? अज़वाज जो है मुजाफ है और हिम जो है मुजाफ इले है. और अच्छा, अला की वजह से यहाँ पे जर आया है अज़वाज पे, यानी अज़वाजुहुम की जगह अज़वाजिहिम हो गया है. अच्छा, फर्स्ट वर्ड भी ऐसे ही था, ली फुरूजिहिम, तो यहाँ पर ली जो है वो हर्फ जर है और फिर हिम उसकी वजह से. अच्छा जज़ाकल्लाह. नहीं, ये बात समझना बहुत जरूरी है. देखें, अगर हम जार मजरूर को नहीं भी समझते ना कि कौन सा जार है कौन सा मजरूर है, किसने किसको जर दिया, और जर दिया तो कसरा तनवीन की सूरत में दिया या कसरा की सूरत में दिया या फतहा की सूरत में दिया, तो समझना जो जरूरी बात है वो ये है कि मुजाफ मुजाफ इलैह को ज्यादा समझें. फुरूजिहिम, इट वाज एक्चुअली फुरूजुहुम,
but because of li it changes to furujihim. Here again ala azwajihim, actually it was azwajuhum, because of ala it changes to azwajihim. इसको कहते हैं लफ्जी अमल लफ्जी, अमल लफ्जी। अब खैर इसमें मैं डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ इसीलिए, वरना ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अला अजवाजिहिम, अजवाज के जीम पे जो कसरा आई है वो अला की वजह से आई है। ये है अमल लफ्जी, यानी इसने लफ्ज को चेंज किया है। लेकिन अमल मानवी ये है कि अला अजवाजिहिम, अपॉन देयर वाइव्स। तो यहाँ पे ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। जी आगे बढ़ते हैं सिस्टर रुखसाना जी। सो आई विल कॉल यू एच, ओके? जी जी जी। आओ जो है ये है और माँ का मतलब है व्हाट। व्हाट, इट्स सिंपल, आओ माँ और व्हाट। जी। मलकत, मलक तो ये तो पोजेशन हो गया ना, मलक, और यहाँ पर ये मलकत है। जी। मलकत को क्या मीनिंग होंगे मलकत के? पोजेस। जी, पोजेस, दे पोजेस। अयमानुहुम, अच्छा हुम तो हो गए देर, मगर ऐमानुहुम ये आई सपोज ये है राइट हैंड्स। जी, राइट हैंड, यमीन कहते हैं राइट हैंड को। ईमान, ईमान नहीं, ठीक है, ईमान नहीं, ईमान हमजा पे फतहा के साथ। ईमान कहते हैं प्लूरल ऑफ राइट हैंड, यानी राइट हैंड्स, राइट। और ईमानिहिम, नुहुम। जी, ईमानुहुम मलकत ईमानुहुम देयर राइट हैंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी आप बढ़िए आगे सिस्टर आर एच। फ यानी देन, और फिर इन्नहुम, इन्ना जो है वो वेरीली ताकीद है, फिर हुम जो है वो दे है। वेरी गुड। इन्नहुम, सो इंडीड दे, आप ऐसे भी इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सो इंडीड दे, सो इंडीड दे व्हाट, सो इंडीड दे आर गैर मलूमीन, दे वुड नॉट बी गैर मलूमीन, दे वुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, being free from blame, gairu malumin, free from blame, like they will not be from the blamed ones, they would not be from the blamed ones. So यहाँ पे can you मीन मालूमीन, मीन जो है मीन, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मीन जो कह रही हूँ, मीन ये जो है ये मालूमीन, ये इसका प्लूरल का हो गया मालूमीन। जी, मीन नहीं, सिर्फ या नून। ओके ओके, ठीक हो गया। ठीक है, या नून। मलूम जो है, भाई प्लीज अगर आप लोगों ने स्पीकर्स ऑन रखे हुए हैं, माइक्स ऑन रखे हुए हैं, तो बाकी आवाजें आप बंद कर दें और स्पीकर से थोड़ा दूर, स्पीकर को थोड़ा सा दूर रखें ताकि मुझे अब मेरी आवाज दोबारा ना आए। अच्छा जी, गैरो मलूमीन। अच्छा, मलूम किसको कहते हैं सिस्टर रुखसाना? मलूम ये ब्लेम करने, ब्लेम समवन, ब्लेमिंग। वेरी गुड। ब्लेम कैसे आपको पता चला? इसका कोई वर्ड है उर्दू में? बताइए प्लीज। नहीं 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 नहीं, नहीं पता मुझे। लफ्ज है मलामत, मलामत, राइट। मलामत करना यानी ब्लेम करना, यानी रिग्रेट करना, राइट। रिग्रेट और ब्लेम दोनों मायने में आता है मलूम। अब ये मलूम जो है वाव मीम, ये इसमें मफऊल के वजन पर है, मलूमुन बरवज़न मफऊलुन। ठीक है, अब ये क्यों हुआ है ये डिटेल की बात है, ये इल्म सर्फ की डेप्थ है। ठीक है, सो औ मा मलकत इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम, so they will be, so indeed they will ghayru malumin, they will not be blamed, they would not be amongst those who are blamed. ahsanti mashallah. Yes, next कौन लेगा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व जी। रहमतुल्लाह। fa is so or but, and then man is who. Very good. So actually this kasra is for ease of reading. Okay, this is this is to ease the reading, but the real word is faman ibtagha. Yeah, faman and it will be kasra because ibtagha and fa does jar to man. Yes. So no. Fa gives a jar to man, but the jar is not exactly expressed in this kasra. This kasra is for ease of pronunciation when you combine these two words. Yeah, I think it's called iltiqa'i sakinain. Yes, iltiqa'i sakinain. Ahsanti, mashallah. I avoid using terms and phrases because
it feels heavy to many of our students, and then like they feel that हमसे नहीं होगा, so that's Yeah. why I avoid this. जी, इल्तिक़ाए साकिनैन को रिमूव करने के लिए मन इब्तगा कर दिया, फमन इब्तगा. Now what is इब्तगा? Can you explain? ابتغاء يبتغي. Yeah, very good. أحسنتي أحسنتي ما شاء الله. ابتغى يبتغي ابتغاء. Right? ابتغى is فعل ماضي, يبتغي is فعل مضارع, ابتغاء is the مصدر for it. ما شاء الله ما شاء الله. ابتغاء, whoever seeks, right? जो कोशिश करे, जो जो इसके इक़दाम करे या कोशिश करे, किसकी कोशिश करे भाई? वरा. जी. Those who are behind or beyond. Beyond, yes, beyond that. Whoever seeks something beyond that, that is already here. Then Yeah, and that's اسم الإشارة للبعيد. जी, बिल्कुल, mashallah. So if you don't say, if someone doesn't know what is ismul ishara lil ba'id, but they can easily understand that the word zalika means that. Yeah, of course. Right? Ahsanti, mashallah. Ji, fa ulaika. Those, no, then, and ulaika, those. Those. اسم الإشارة. Mashallah. Hum? They. Al-adun. That is, I don't know what that is. आदा यानी बढ़ जाने वाला, हद से बढ़ जाने वाला. आदुन, right? The word ad, qawm ad is named ad because of their udwan. So the udwan is masdar, right? And adun is the ism fa'il for that masdar. Right? Okay. It can be ada ya'idu, or it can be ada yu'adu. Ada yu'adu. So ain dal needs more explanation than you think, because ad, ain waw dal, al aud is the masdar for that, right? So आदत उर्दू का लफ्ज है, आदत हो गई है, काम करने की आदत हो गई है, यानी बार बार वही काम करता है, पलटता है उसी तरफ, राइट? अच्छा, सो ट्रांसलेशन. So what's the meaning of the ayat? فَمَنِ ابْتَغَى. But those who seeks وَرَاءَ ذَلِكَ, beyond that, فَأُولَئِكَ, then those humul adun, they are really completely adun, transgressors, right? So hum is again for ta'keed, mashallah. We have learned before that whenever there is a hum or a hiya or a hoa followed by another ism with alif lam, right, that gives the meaning of ta'keed, mashallah, jazakallah. Yes, next, who's next? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. So walladhina, the word is what? Ladina is those who, and those who, alladhina is those, those who, yeah. The word allazina is translated to those who because it is always a mausul, it is always a conjunction, right? So when we have a conjunction, we have to explain something about that person, right? Okay, wallazina, like we are explaining something about them, about the Mominoon. जी, आगे बढ़ते हैं. Whom is they? لأماناتهم. Okay, so li is to, or no, li doesn't mean to, actually it means for. Yeah, right, but here they have written to for to justify the English sentence. Okay, right? Ji. Yeah, amanatihim, amana, so to come word from amana to so when you give something to someone, is amana that you trust someone. Right, it's a trust. Amanatihim. Him is there. There, very good. Their amanat, right? About for their amanat, or because of their amanat, or to their amanat, right? Yeah. And wa ahdi, him. So what is and ahdi, so you give ahad to someone. Yes, ahd. Ahd to someone means a covenant or a promise. Yeah. So you trust someone and you promise. Ji. Wa ahdi, him. So their ahad, their promises. Their ahad. To their. Ji. Ra'un. Ra'un is observers. Observers, good. रियायत करने वाले, उर्दू में हम कहते हैं रियायत कीजिए, राइट? रियायत करने वाले. अच्छा, एक रियायत तो होता है डिस्काउंट के माने में कि आप हमारे कुछ रियायत कीजिए. ठीक है, तो ये बहुत हमारे साथ जो है ये सुनने मिलता है हमें कि कुछ डिस्काउंट कीजिए. रियायत करना यानी उसको ऑब्जर्व करना,
नमाज के औकात की रियायत करना चाहिए, यानी उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। एहतराम रमज़ान की रियायत करनी चाहिए, यानी उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो रा जो है रियायतुन जो है इसका मस्दर है, और राऊना जो है इसका इसमें फाइल है। तो मायने क्या बने? वल्लज़ीना हुम, एंड दोज हु लिअमानातिहिम, फॉर देयर ट्रस्ट, और फॉर देयर अमानत को क्या कहेंगे इंग्लिश में? दूसरा भी कोई वर्ड दे सकते हैं हम? और So they give their trust in someone or जी, वअहदिहिम, जी, and their promise, वअहदिहिम राऊन, they are observers, they observe their amanat and their ahad, right? माशाल्लाह, ahsanti. Okay, so who is next inshallah? आ जाए वन बाय वन प्लीज। सिस्टर शमीम नहीं आई है क्या आज? I'm present. ओके, वालेकुम अस्सलाम। आर यू इन अ पोजीशन टू पार्टिसिपेट? जी हाँ। जी जी जरूर, बिस्मिल्लाह। वल्लज़ीना, and those who, इसमें मौसूल, या related pronoun, यस, whom गुड। they, ala salatihim, अला you have सलावातिहिम, on salat, prayers him, on their salat, yuhafizun, सलावातिहिम, salawatihim. ओके, Is it plural of salat? Yeah, यस salat, एग्जैक्टली, माशाल्लाह, ala salatihim, yuhafizun. ओके। It's They are strictly guard, they strictly guard, right? They guard strictly guard the prayers. their prayers, over their prayers, or on their prayers, or about their prayers. So this word can be translated to about as well. They are hum wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, and indeed they are about their prayers very strictly guarded, right? So Strictly guarded. strictly guard. Hafaza yuhafazu, muhafazatan. So this is bab fa Fa'ala. fa'ala. Good, mashallah, mashallah, very good. Strictly guard over the prayers. Ulaika. Yes, ulaika. Those. Those whom. Humul warithun. So they are those. They are those. Ulaika hum. They are those who are what? Al-warithun. Who are the inheritors. Inheritors, right? Inheritors of what? Carry on. Yes, Alladhina inshallah. yarithuna. Alladhina, those who yarithuna, who shall inherit. Very good. Yarisuna. Warasa yarisu. Warasatan. Warasa yarisu wirasatan. So here we have got plural yarisuna. What do what do they inherit? Al-Firdaus, the paradise. Al-Firdaus. Good. They inherit Al-Firdaus. So because this is the object for yarisuna, so it's again mansub. Yarisuna al-Firdausa. And then hum fiha khalidun. Therein, fiha, in it. In it. Therein khalidun. They will dwell forever. They will live forever. Okay, so in it is a better translation than therein. In it is a better translation than therein. So it's up to you how you translate it, okay? In therein hum fiha khalidun. Khalidun, khalada yakhludu ikhladan, right? Khalada yakhludu khuludun. Khuludun. I mean khuludan. So khulud is the masdar for khalada yakhludu. Oh, khulud. MashaAllah. Khalada is the verb. What does it mean? Khalada? To dwell. To be forever. To live, yeah. To live. Yes. Khalada, live. To be forever. It can be a living thing, or it can be a dead thing. Khalada yukhlidu. Right? To be forever. Okay, mashallah. Would you like to continue, sister? Okay, let's invite someone else. और आइए जी, next कौन आएगा? जी सिस्टर सईदा, आप बहुत देर से नहीं आई हैं। वो जैसे बेबी है, लेकिन now she's far away. I can do it. हम कहाँ पर पहुँचे हैं? आप सामने देखें स्क्रीन पे। अच्छा, वलकद पे ना? जी, वलकद। अच्छा, हाँ, वलकद वो है कंजंक्शन है, and लकद वर्ब है। लकद मतलब क्या हमने पैदा किया? To create? नहीं, पैदा नहीं किया। लकद means indeed, यकीनन। लकद, अच्छा, लकद indeed, अच्छा, indeed. Okay. हाँ, खलकना is created. We created. We created because of na alif na, it's we Yes, created.
Very good. Khalaqna means we created. Al insana. The human, because it's a talkie, because of al, it's emphasizing the human being. Yes, इंसान the को human being. Insan means all insan here. Al insan here means all humanity, right? जी, And al insana is the maf'ul for it. You know that it is the maf'ul for khalaqna. yes, हमने पैदा किया, किसको पैदा किया? इंसान इंसान, को। इंसान को का तर्जुमा कहाँ से आया? यहाँ से कि इस पे फतहा है, आप देख सकते हैं हालत नसब में, राइट? जी. वेरी गुड, माशाल्लाह. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. मिन सुलालतिन. Min is a preposition, harf है, जी जी. और सुला सुलालतिन. लती वो है एक्सट्रैक्ट है, लेकिन ये है क्या है, देखिए चीज होती है जिसको नाउन कहते है. हैं. हाँ, नाउन है, बिल्कुल नाउन है, जब भी तो इस पे तनवीन है. नाउन है इसीलिए इस पे कसरत है, तनवीन है, राइट? सुलालतिन ये कहते हैं सिल्क. सुलाल यानी एक्सट्रैक्ट, एसेंस, राइट? चेन्स को भी सुलाल कहते हैं, ठीक है? मिन तीन. मिन इज अ हर्फ, प्रपोजिशन है, और तीन है वो है नाउन है, उसका मतलब है दिन, डे. जी. फ्रॉम क्ले. फ्रॉम क्ले एक्चुअली तीन कहते हैं क्ले को. तोय से जो तीन होती है उसको कहते हैं क्ले. और मिन मींस फ्रॉम क्ले, राइट? इन्होंने यहाँ पे ऑफ क्ले लिखा है, लेकिन फ्रॉम क्ले इसका सही तर्जुमा है. माशाल्लाह. सुम्मा इसका मतलब सो, देन ना, सुम्मा. जी. सो जी बिल्कुल. देन या सो. सुम्मा मींस अगेन. Then, so it can be used like it's also a word depending like on the sentence. Depending on the sentence, particle है. इसको जअलना. उर्दू में कैसे कहेंगे? सुम्मा को उर्दू में क्या कहेंगे? फिर फिर ओके ओके, जज़ाकल्लाह. या दोबारा. जअलनाहु. जअलनाहु, हु मतलब है वो है प्रोनाउन है हिम के लिए. हिम. जअलना. जअलना फाइल है, वर्ब है. जी. हमने, और ना से वी आता है, तो जी. वो हमने उसको बनाया. बनाया. वेरी गुड. हमने उसको डेजिग्नेट किया. बनाया इस माने में नहीं बनाया कि किसी रॉ मटेरियल से बनाया, बल्कि बनाया यानी हमने उसको डेजिग्नेट किया इसके लिए. उसकी ड्यूटी दी उसको. क्या? वी मेड हिम. जअलना फेल और फाइल और मफऊल. जअलनाहु फेल और फाइल और मफऊल. फेल क्या है? जल. और फाइल कौन है? ना. और मफऊल कौन है? हु. जअलना हमने बनाया. हु उसको, राइट? ये सब हम पढ़ चुके हैं ना अपनी क्लासेस में. जअलना हमने बनाया. हु उसको. देन वी. सुम्मा जअलनाहु. देन वी मेड हिम. हिम कौन? कौन हिम? इंसान. इंसान. अच्छा. सुम्मा जअलनाहु. जी आगे बढ़ते हैं. नुतफतन. नुतफतन इट्स अ नाउन है ना. नाउन. फिर हमने बना दिया उसको एक नुतफा. एक नुतफा. कतरा. कतरा नहीं. नुतफा एक्चुअली कहते हैं सीड को. सीड यानी वो चीज जो अपने आप को ग्रो कर सकती है, जैसे ऑरेंज सीड होता है, राइट? तो उसको भी नुतफा कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो इंसान के हवाले से बात आई है, तो ये सिमन ड्रॉप के लिए ये इस्तेमाल हुआ है. फी करारिन. जी. फी करारिन. फी इज अ हर्फ, प्रपोजिशन है. जी. और करारिन है, नाउन है, इसम है. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सिस्टर. बात यह है कि आप ना प्रेपोजिशन, नाउन से इससे थोड़ा सा बाहर निकल के और खुद वर्ड के मीनिंग के अंदर फोकस करें. ठीक है? करारिन है मतलब एक लॉजिंग है. जी, लॉजिंग है. ठीक है, आप अपने अल्फाज में भी एक्सप्लेन करें, जरूरी नहीं है आप इसी ट्रांसलेशन को फॉलो करें. नहीं, लेकिन उर्दू में मुझे नहीं आता है इसका मीनिंग. जी जी. करार करना मतलब सुकून करना. हाँ, आराम से सेफ्टी करना. सेफ्टी को भी करार कहते हैं. अच्छा. मकीन. मकीन किसको कहते हैं? एक सेकंड वो बेबी सेकंड. सॉरी, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन, आप प्लीज. फी करार मकीन, लाइक इन अ सेफ लॉजिंग. मकीन जो है वो सेफ्टी के माने में होता है. मकान से मकीन. मकान यानी सेफ्टी की जगह, और मकीन यानी रहने वाला. मकीन यानी रहने वाला, राइट? तो करार मकीन यानी अ सेफ प्लेस फॉर अ रिजाइडर, फॉर अ सेफ प्लेस फॉर अ गेस्ट, राइट? एक करार मकीन. फी करार मकीन एक रहने की जगह पर, एक रहने की सेफ जगह पर हमने उसको लॉन्च कर दिया. हसनती, माशाल्लाह. थैंक यू सिस्टर सईदा. अच्छा, नेक्स्ट कौन आएंगे जी? आइए, इंशाल्लाह ट्राई करें, कोई मुश्किल नहीं है. अगर मुश्किल होगी भी तो हम साथ में हैं आपके, डोंट वरी. सिस्टर उस्मान. अस्सलाम वालेकुम.
जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्लीज। अरे बहुत डर लग रहा है मौलाना, उसकी तो क्या हो जाएगा कोशिश भाई? तो कर रही हूँ मगर कुछ भी नहीं होगा, अगर आप कुछ गलत बता भी देंगी तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम सीख रहे हैं ना। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, कोई इसमें थोड़ी मसला है। जी बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा का मतलब देन है क्या? देन देन भी है। हो सकता है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे एक बात, सिलसिले में एक बात की जा रही है कि पहले उसको एक नुतफा बनाया, फिर पहले उसको मिट्टी से पैदा किया, फिर उसको एक नुतफा बनाया, फिर उसको करार मकीन में भेजा। राइट। तो इस वजह से इसका तर्जुमा देन किया गया है। राइट। अच्छा जी वैसे सुम्मा का तर्जुमा अगेन भी होता है। राइट। जैसे जी। माशाल्लाह सुम्मा माशाल्लाह, यानी माशाल्लाह अगेन माशाल्लाह। राइट। तो उस वक्त सुम्मा अगेन का तर्जुमा देता है। ओके। अच्छा ये देखिए, अच्छा खलकना, खलकना मीन्स पैदा किया। वी क्रिएटेड, किसने पैदा किया? हमने पैदा किया, हमने पैदा हमने। किया। तो ये नून अलिफ जबर ना जो है इसका, ये वी की तरफ इशारा करता है, ये इसका प्रोनाउन है, इसकी अलामत है। राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा नुतफता, नुतफता, नुतफे से। नुतफे को, सुम्मा खलकनल नुतफता। ठीक है, अगर आप नुतफे से इसको ट्रांसलेट करना चाहती हो फिर भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं। अलाकतन, अलखतन। अलाका किसको कहते हैं? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक। अब वो अलक क्या है? अलक यानी खून का लोथड़ा। ऐसी राइट। एक 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 क्लिंगिंग सब्सटेंस, एक एक चिपका हुआ खून का लोथड़े को अलका कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फखलकना नहीं, फलक अलखता। नल नहीं पढ़े आप, जब ट्रांसलेट करें तो आप पढ़े फखलकना। फलकना जी। फ का फ देन, हाँ हाँ, इस लिहाज से देन है। जी जी और खलकना यानी वी क्रिएटेड, जी। फिर से आया वो। अल अलकता, अल अलखता वो एक यानी क्लिंगिंग। सब्सटेंस, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे मौलाना? लोथड़ा। क्लिंगिंग लोथड़ा। अच्छा। ठीक है। उसके बाद जी मुदगतन, मुद्गा मुदगतन। कहते हैं एम्ब्रियो को, मुद्गा कहते हैं एम्ब्रियो को। राइट। एम्ब्रियो को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। मुद्गा, एम्ब्रियो। फखलकनल मुदगता यानी वही है, फिर देन वी क्रिएट, हमने पैदा किया। जी। मुदगता यानी वही मुद्गा एम्ब्रियोनिक। को, मुद्गा मुदगत को। मुदगता जी। मुदगत। मुद्गता इज़ामन, इज़ाम कहते हैं हड्डियों को, बोन्स को। आज़म की जमा होती है इज़ाम, जोए से। ठीक है, जे से नहीं, जोए से। इज़ामन, उसको बोन्स दी। जी। फकसोना देन हम्म, फकसोना। कस्सा यानी जी मैं बता जैसा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। चादर, कसो, चादर की तरह। जी वेरी गुड, अहसनती, माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा वेरी गुड। मैं, मेरा किसा दिमाग है, उधर जा रहा है, हड्डी से हाँ किसा। किसा की तरफ, किसा गुड। यानी चादर। देखें, किसा जो है कसौना यानी उसको लपेटने कपड़े वाला। को जी, कपड़े को लपेट देने लपेटने। वाला। राइट। तो यहाँ पे ये लपेटने के माने में है कि फिर हमने लपेट दिया इज़ाम को, इज़ाम को यानी बोन्स को हड्डियों लपेट को। दिया, किस चीज से? लहम से। लहम, लहमो का लहमी। राइट। दमो का दमी, हाँ, रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो लहम किसको कहते हैं? फ्लैश को, यानी गोश्त को। गोश्त को। राइट। फकसौनल इज़ामा लहमन, फिर हमने लपेट दिया हड्डियों को गोश्त से, गोश्त को। गोश्त से। सुम्मा जी आगे बढ़े। फिर सुम्मा देन जी अनशानाहु, जी अनशानाहु। जी। अ, ये अनशाना समझ नहीं यानी आ रहा। अनशाना, इन्ना अनशाना हुन्ना, वो सूरह वाक़िया, खैर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं आसानी से आपको बताता हूँ। वी ब्रॉट फोर्थ, हम आगे लाए, हम आगे लाए। खलकन, यानी हम यानी उसे वो आगे ले आए। खलकन, एक मखलूक की एक सूरत। मखलूक, राइट। ये हाल, मखलूक को। जी ये हाल है। आखर, अनदर, फिर हमने आखरा उसको एक और और फिर चीज बना दिया। खलकन आखर। फतबारकल्लाहु, सो फ का मतलब सो। अ, तबारक, तबारक, अ, तबारक का है। तबारक यानी मुबारक है। राइट। ब्लेस्ड है, मुबारक है। अल्लाह, अल्लाह, तो मुबारक है अल्लाह। अहसनुल खालिकीन, हसन यानी सबसे अच्छा बेहतर। जी खल्क करने वाला।
खल्क करने वाला, माशाल्लाह, वेरी गुड। सबसे अच्छा है खल्क करने वालों में से, अहसनुल खालिकीना, राइट, यानी अच्छा है सब खल्क करने वालों में से। या हम ये भी कह सकते हैं, उर्दू में हम ये भी कह सकते हैं कि वो सबसे अच्छा खल्क करने वाला है, द बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएटर्स है वो, राइट। माशाल्लाह हाँ सिस्टर, आपने बहुत अच्छा किया। और आपके पास इत्तेफाक से जो आयत आई थी वो सबसे ज्यादा मुश्किल थी अब तक की आयतों में, लेकिन माशाल्लाह आपकी जो उर्दू की अंडरस्टैंडिंग है, उर्दू में आपका जो ग्रिप है, वो आपको इंशाल्लाह दैट्स गोइंग टू पे यू ऑफ इंशाल्लाह हियर। ठीक है, तो आपकी उर्दू की जो शुद्धबुद्ध है वो आपको बहुत काम आएगी यहाँ पे, क्योंकि आपने कसौना को समझ लिया, तो इसके ईसा माने हैं कि ईसा माशाल्लाह आप इसका ईसा ट्रैक की ले। तरफ। जी शुक्रिया मौलाना, उर्दू में जरा ज्यादा समझ में आ जा रहा है हाँ ठीक इंग्लिश है। के बाद। एक्चुअली मैंने इंग्लिश इसलिए चूज किया है क्योंकि इंग्लिश में ना जो सेंटेंसेस हैं उनकी तरतीब बिल्कुल वैसी ही बन जाती है जैसी अरबी में है। उर्दू में अच्छा अच्छा। अल्फाज ज्यादा एम्बिगुअस होते हैं, जैसे वो, राइट, तुम, राइट। अब ये प्रोनाउंस ही अगर एम्बिगुअस हैं तो इसमें जरा मुश्किल हो जाता है एक नॉन उर्दू स्पीकर को समझने के लिए। और हमारे साथ नहीं नहीं, आप जैसा भी कर रहे हैं करिए, मगर मैं अपना ट्रांसलेशन उर्दू के जरूर वैसा जरूर आप बिल्कुल समझ उर्दू में ले रही करें, हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल उर्दू में करें, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, शुक्रिया तो मौलाना। माशाल्लाह। तो अब कौन रह गया भाई, कोई रह गया हमारी क्लास में जिनकी बारी नहीं आई है? तो मैं जरा चेक करूँ कौन कौन आए हैं। सिस्टर रुखसाना, सिस्टर साबरा करीम, सिस्टर सईदा मुखी, सिस्टर शमीम हमीद, दोनों ज़ैनब आ गई। सिस्टर सुकैना, कैन यू पार्टिसिपेट टुडे? आर यू इन अ पोजीशन टू पार्टिसिपेट? Yes. वुड यू लाइक टू? Yes, I just missed a little part. So I would just like, I have to recite the word and the meaning. Yes. And if you don't Okay. understand something out of it, you have to tell me about it so I can explain Sure. in a very small detail, inshallah. No problem. So, inshallah, we'll be starting this para. Okay. Okay. So I should Bismillah. read it? Okay. Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma, then, innakum, surely you, ba'da, after, zalika, that, lamayyitun, indeed shall die. Ji. Thumma, So, then, no, not like this. sorry. Lam yatun, lam is for ta'keed. Okay, this is called lam ta'keed. lam Okay. yatun, यानी जरूर मर जाओगे, जरूर मुर्दा For हो sure. जाओगे, will for Yeah. sure die, right? Okay. Mayyatun means if Dead. we translate it like without Body. changing anything, then it would be dead people, Yes, right? dead body. You will Yes. be Mayyit. surely you shall be dead people. Acha ji. Next one. Okay. Thumma, then again, innakum, inna is surely, kum is you, yawma means the day, on the That day. or that day, both are correct. On the day, al-qiyamah, the day of resurrection, right? Al-qiyamah So is the day Yawm of resurrection. al-Qiyamati is jar majroor. Yawm al-Qiyamati, okay. Okay. Yub'athun will be resurrected. Tub'athun. Yes. Tub'athun, sorry. Tub'athun. So You will be. tub is will be, right? Soon is resurrected. No, وَلَقَدْ no. You are going very fast. Just explain this again. Tub'athun. Tub'athun is will be and No. resurrected will be athun, or is it Tub is not tub'ath? will be. Ta, only the ta represents the will be thing, right? The future. Okay. Have Yes. you done that lesson? Huruf atain, hamza, ta, ya, nun. Yes, I was there. This is the alamat fi'l mudari. This is the alamat for fi'l mudari. Waw nun is the alamat for plural. Ba'ath means resurrection or raise, to raise something. Yes, Like ba'ath. walladhi ba'atha fil ummiyina. He is the one who raised someone from the ummiyin, right? So ba'ath means to raise something, right? Ba'ath, okay. That's why it is tub'asuna means you will be resurrected. You will be resurrected. Summa क्या था आयत? Summa innakum, indeed you will surely yawm al-qiyamati, on the day of judgment, on the day of resurrection, tub'athun, be resurrected. Yes. Carry on. Walakad. Okay, wait. I think we can stop it here because we are already past time. अब आप लोग मुझे जरा एक जल्दी से ये बताएं कि आप लोग थक गए हैं या मजीद हम इसको आगे बढ़ाएं? We can continue, Sheikh, now. Good. या आप बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। दो और बाकी क्या कहते हैं? Walakad and indeed. Sorry, should I continue? Yes, please. Walaqad and indeed. And indeed, khalaqna, we have created fawqakum, above you.
Above you. Fawqa means above. Kum means Above, you. and kum means you. Above Yes. you. Sab'a means 7. 7. Sab'a is a number, right? Sab'a. Yes, Sab'a is a number. Tara'iqa, heavens, the paths Heavens, of ways, yes. paths. Tariq Yes. is called a way or a path, and tara'iq Yes. is the plural for tariq. The word tariqatun is also from the same root. Ta, ra, Yes. qaf. Right? Yes. Iq, Wama, paths. wama, and wa means and. Wama kunna, and we were not. We were not. Ma here means Anil not. halqi, Wama anil kunna. is off. No, we are going very fast. Slow down. Wama Okay. kunna. This ma is for the word no, and you are Okay. not, and are not. Or you can also translate it and not you, and We not were. we were. Yes. Kunna. Kunna. This is a very important word. Kunna. Okay. So this is from kana yakunu. Kana yakunu. Kana. Kana is the past tense, means it means he was. He was. But the word kana can also be used for future. Sometimes it's one of those words that can be used in different tenses, right? Kana, Yes. it can be, kana can also be used as is or was. So kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, and kunna. So this is your homework for everybody. This is a homework for today. Let me write it down for you somewhere, please. I find some space and write it down. ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को करना है. अभी अगर कर लें तो ज्यादा अच्छा है. देखें, ये है काना की कंजुगेशन. काना, इसके बाद आएगा काना, उर्दू वाला काना नहीं है, काना, और तीसरा है का. कानत है ना, कानत. आएगा आएगा, सबर करें. कानू. अच्छा, कानू, सॉरी. इसके बाद आएगा फेमिनिन में कानत. कानता. गुड. कानता. कानत ना. नहीं, कुन्ना. कुन्ना. ओ कुन्ना, हाँ, बिकॉज इट्स अ वीक वर्ब, इसलिए वीक वर्ब्स जी मैंने जी नहीं किया. वेरी गुड. इट्स अ वीक वर्ब. At least you know this. कानता कुन्ना. Kunna without an alif, okay? That's why we are always very strict on tajweed. If it is a kunna only with a fatha and someone reads it kunna, then it changes the meaning. How? I will tell you about it. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Are we done with this? Yes. मौलाना साहब प्लीज थोड़ा ट्रांसलेट कर देना. जी. Kana yani he was. Kana yani they both were. Kanu means they all were. Kanat means she was. Kanata means they both were, like they were feminines. They both ladies were. Kunna means they all ladies were, for plural. खुन्ना का क्या है मौलाना? वो सब थीं. उर्दू में भी बता देता हूँ. काना यानी वो था. काना यानी वो दोनों थे. कानू यानी वो सब थे. कानत यानी वो थी. कानता यानी वो दोनों थीं. देखें, यहाँ उर्दू में एक्सप्रेशन आसान है. कानता, वो दोनों थीं, यानी दोनों लेडीज थीं. कुन्ना यानी वो सब थीं. ये पार्ट आप लोग कर लें तो मैं इसके बाद फिर आगे बढ़ूँ. ये कंजुगेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ और थोड़ा सा इसका होमवर्क भी दे रहा हूँ. आप लोग इसको जो है इसको जपते रहें, यानी आप इसको बोलते रहें, तस्बीह की तरह आप इसको पढ़ते रहें. काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना. ठीक है, ये 14 अल्फाज हैं. अभी 6 हमने आपको लिखवाए, इसके बाद दोबारा आगे बढ़ते हैं. कुंता, यानी उसके बाद वो जो 6 अल्फाज थे, उसके बाद नंबर 7 पे आएगा कुंता, यानी तू था. कुंतुमा, यानी तुम दोनों थे. कुंतुम, यानी तुम सब थे. कुंता, कुंतुमा, कुंतुम. ये मैस्कुलिन के लिए. अब फेमिनिन के लिए क्या होगा? कुंती, यानी तू थी. तू थी. कुंती यानी तू थी. कुंतुमा, अगेन सेम वर्ड, तुम दोनों थी. कुंतुमा,
तुम दोनों थी, कुंतुन्ना यानी तुम दोनों थी, उसको नहीं देखिए, पुट इट इन हर माउथ। कुंतुन्ना कुंतुम कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना। और आखिरी के जो दो वर्ड्स हैं 13 और 14 उस पे आएगा कुंतु, कुंतु ऊपर दम्मा के साथ, कुंतु और कुंतु यानी मैं था, आई वॉज, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, कि मैं था जालिमों में से, कुन्ना यानी हम थे। इसका अलिफ थोड़ा मैं और ऊपर ले जाऊं आई थिंक जी, कुन्ना यानी हम थे। ये वर्ड कुन्ना के लिए हमने ये सारी जो है डिस्कशन किया है इसको, और ये वर्ड बहुत ज्यादा आता है कुरान मजीद में। कुन्ना यानी हम थे, वी वर, हम थे। एंड ऑल्सो वी आर के लिए भी यही वर्ड यूज होता है, हम थे, हम हैं। इन्ना कुन्ना फाइलीन, इन्ना कुन्ना फाइलीन, बेशक हम ही थे, हम ही हैं जो काम करते हैं, फाइलीन, बेशक हम ही करते हैं। अब ये करते हैं के मायने में भी आ सकता है और करते थे के मायने में भी आ सकता है। तो मौलाना कुंतुन्ना इज यू आर प्लूरल। जी एग्जैक्टली, यू आर प्लूरल फॉर ऑल लेडीज, एंड this can only be about ladies because the feminine noun covers all the feminine nouns, right? So जरा today's प्लीज lesson is जी एक वो कुंती और क्या है उसका कुंतुन्ना, जरा प्लीज रिपीट करते अगेन। बिल्कुल, मैं कुंती आपको रिपीट करके बताता हूँ, जरा गौर से सुनिए। शुरू से शुरू करता हूँ, ठीक है? कुंता से। कुंता यानी तू था, कुंतुमा यानी तुम दोनों थे, कुंतुम यानी तुम सब थे, कुंती यानी तू थी, कुंतुमा अगेन तुम दोनों थी, कुंतुन्ना यानी तुम सब थी, कुंतु यानी मैं था, कुन्ना यानी हम थे। ये इसका उर्दू बन गया। अब इसका मैंने दोनों के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग इसको लिखने की आदत डालें। जब मैं आपको कुछ किसी चीज का कहूँ ना कि इसको लिखें, तो प्लीज उसको जरूर लिखें, क्योंकि दैट इज दी मोस्ट वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो इफ यू राइट देम डाउन इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। ठीक है जी, इंशाल्लाह। मौलाना एक क्वेश्चन है। जरूर। अभी इसमें आपने बोला कानता इज यू बोथ वर, हम्म। और नहीं, कानता मैंने नहीं बोला यू बोथ वर, कानता मैंने बोला दे बोथ वर। ओ दे बोथ वर, हाँ, ओके। वो थर्ड पर्सन के है ना, so शुरू के 6 जो थे वो तो थर्ड पर्सन के थे, यानी ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, हाँ। प्लूरल, मैस्कुलिन और फेमिनिन, राइट? तो ये जो इधर है कुंतुन्ना इज यू आर, तो फिर कुन कुन तुमा यू, वो भी यू आर होगा, जी लेकिन ओनली फॉर टू पीपल। नहीं, मैंने पहले देखें, आप जरा इसको दोबारा देखें अपने पेज पे आपने क्या लिखा है। हमने बताया का न, का ना, का नू, का नत, का नता, कुन्ना, कुन्ना, कुंतुन्ना नहीं था वो था कुन्ना। मींस जी। मींस दोज ऑल वर, दे ऑल वर, लेडीज के बारे में बात हो रही है, दे ऑल लेडीज वर। अब यहाँ कुन तुन न किया तो ये कुन तुम का काउंटर पार्ट है, यानी यू ऑल लेडीज आर और वर, राइट? जी। ये काना जो वर्ड है बहुत फ्लेक्सिबल है, इस वजह से इसके इतने सारे मीनिंग में बोल रहा हूँ। था हो, यू आर, यू वर, राइट? हर वक्त मैं चेंज करके इसको बोल रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं ये समझा रहा हूँ। काना इज अ वेरी फ्लेक्सिबल वर्ड। कुन यानी वो थी, और कुन तुन यानी तुम हो, तुम सब औरतें हो। काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु और कुन्ना। कुन्ना एक्चुअली कुन प्लस ना है, तो वो बन गया कुन्ना। इंशाल्लाह क्लियर है सबके लिए? कोई इस बारे में कुछ पूछना चाहता है तो अभी ही पूछें प्लीज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये बहुत ज्यादा आता है कुरान मजीद में। एक क्वेश्चन है मौलाना, ये काना फर्स्ट जो आप बोले काना, काफ अलिफ जबर का, नून जबर ना, काना, या नून जस्ट नून काना,
उसके ऊपर काना, जबर। हाँ जबर लगाइए काना पे, मैंने नहीं हाँ, लगाया था। तो फिर उसके बाद जो वर्ड है का ना है ना, वो वो दो दोनों लोगों के, काना जी काना तुम दोनों थे, कानू सब, वो तुम सब थे, कानू यानी वो सब। कानू यानी अच्छा वो ठीक है। सब थे, वो सब थे। Can I just explain it in English once? That's Okay, what I understood. I'm explaining. Kanu is they were. Kanna he was. Kunna we were. Kanat she was. No, Kantuma you all were. wait for Kunta a he was. जी जी देखें, Kanata they two were female. okay, Kuntu I was. Kunti she was. mhm, Kunna they are ladies. they were, They were for female. Kuntuma we all were. kuntuma What is you all were, kuntuma? Oh, kuntuma is you all were. you all were, And kuntuna, kuntunna, yeah, that means this in word is English. actually tumna, kuntumna, there is an idgham here, Kuntumna. right? Oh, there's a In, ma in the middle. yes, Okay. noon fatha na, Kuntumna. What does right? that mean? So there is an idgham. Kun- You all were, You all were. kuntunna, you all Kun- were, you all Kuntumna. ladies were, Can you write kuntumna or kuntunna? I kuntunna, didn't get it. Kuntunna. Okay. Kuntunna. Okay. You all were ladies. And kuntuma? you all ladies were, Kuntunna. You all were female. And kuntuma is male. kuntuma can be for Kuntuma is male dual. or female. Dual. दोनों के लिए, for both of Dual. them. Okay. Okay. Acha, I think there's that's something it. I would like to say here. Please Yeah. follow the sequence. If I'm telling you something in a sequence, follow the sequence because the sequence is more important than the example. Yes. When Yes. you grasp on the sequence, when you grasp on the formula, when you exactly know the formula, then things get very, very easy for you. Okay, so that's why I follow the sequence always. Although some of the words that we explain in the middle are not so important, like kuntuma, right? It's not a very important word in the Quran. It's not being used many times in the Quran, right? Or the word kunti, maybe there are 2 or 3 or 4 examples of kunti in the whole Quran, but the word kunta, kuntu, and the most used is kana and kunna, the first one kana and the last one kunna and the middle one kanu. They are the most used ones, the most frequently occurring words in the Quran. But I still discuss all the 14 words. That's because that you can understand everything that's going on, all the changes in the suffixes and the harakat. You should be well aware of them. Yes. Okay. आप Okay. पढ़ के सुनाइए मौलाना, शुरू से प्लीज जरा रीड करिए, तो ताकि हम पूरा। मैं करता हूँ, देखें, मैं लफ्ज बोलूंगा और उसके बाद उसका उर्दू में तर्जुमा बोलूंगा, ठीक है? पहला लफ्ज था काना, यानी वो था, ही वॉज। इसके बाद दूसरा लफ्ज था काना, यानी वो दोनों थे, यानी दे बोथ वर। तीसरा लफ्ज था कानू, यानी वो सब थे, यानी दे ऑल वर। अब ये शुरू के 3 हो गए, काना काना कानू। नेक्स्ट है नंबर 4 पे कानत, यानी वो थी, शी वॉज। इसके बाद 5वां वर्ड कानता, वो दोनों थीं, दे बोथ लेडीज वर। नंबर 6 था कुन्ना, काफ नून दमा, कुन नून फतहा ना, कुन्ना, वो सब औरतें थीं, दे ऑल लेडीज वर। ये हो गया नंबर 6। यहां तक सब साथ में इंशाल्लाह। जी। चले आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 ये हमारे सामने आ गया। नंबर 7 कुंता, तू था, यू वर। कुंता, तू था, यू वर। कुंतुमा, तुम दोनों थे, यू बोथ वर। कुंतुम, तुम सब थे, यू ऑल वर। कुंती, तू थी, यू वर, when we are talking to a lady। कुंती, यू, एक्चुअली तो उसको होना चाहिए was, राइट? कुंती, यू वर। यू was तो कहेंगे तो इंग्लिश में गलत हो जाएगा। कुंतुमा, यू बोथ लेडीज वर।
कुंतुन्ना, यू ऑल लेडीज वर, तुम सब औरतें थीं। यहां तक सब साथ में। जी नंबर 13 कुन तो, मैं था या मैं थी, दोनों के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल होगा। कुन तो, ये ग्रीन वर्ड है। ग्रीन वर्ड वो है जो जेंडर डिफरेंस नहीं है, जिसके अंदर एक ही जेंडर, यानी मैं था और मैं थी, दोनों दोनों के लिए लफ्ज होगा कुंतु। और कुन्ना, वी वर, हम थे या हम थी, हर हवाले से ये इसी तरह होगा। इसमें किसी को कोई सवाल है तो प्लीज जरूर पूछें, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, इसको नहीं छोड़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 12 जरा रिपीट कर दीजिए। कुन जी तुन्ना, जी। तुम कुन सब और थे। तुन्ना, जी You तुम all were सब female. औरतें थीं, यू ऑल लेडीज वर। और जो लफ्ज कुन तुन्ना है, इसके बारे में एक और बात मैंने बताई आपको, कि ये एक्चुअली कुन तुम ना था। ठीक है, कुन तुम के ऊपर के बाद नून फता ऐड कर दिया तो वो इदगाम हो गया, मर्ज हो गया, तो ये बन गया कुन तुन्ना। ये थी काना की गर्दान। काना की गर्दान क्या है? काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुन्ना कुंतुन्ना कुंतु और कुन्ना। राइट। अब नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को करवाऊंगा यकूनू की गर्दान, यकूनू की कंजुगेशन। अब इसी इसी वजन पे, काना के वजन पे एक और लफ्ज है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कौन बताएगा? काना के वजन पे, काना के पैटर्न पे एक लफ्ज है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कुरान में, वो क्या है? काला बताइए। विच इज द वर्ड? काला। ahsanti ahsanti, now you told me काला, now tell me the gardan of काला, tell me the conjugation. काला 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 कालू कालत Mhm, कालता mhm. कुल 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 कुलना No. कुलना या Yeah, right. लेडीज कुलता कुलतुमा कुलतुम कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना कुलतु कुलना ahsanti, mashallah, zindabad, mashallah, very good. What does qultu means? I I spoke speak. I say. I said. ahsanti. What does qulna means? We said. We said. ahsantum ahsantum, mashallah. Now your homework for today, everybody, is the same thing about qala. We have discussed today kana in detail. Now you have to write the conjugation for qala. What is the conjugation for qala? It is qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu and qulna. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. मेरे ख्याल में इतना बहुत है बहुत ज्यादा हो जाएगा उतना। जी, सवालात से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को आज का दर्स कैसा लगा, किसको मुश्किल लगा, किसको आसान लगा, बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। किसने कुछ नया सीखा, किसने कुछ नया नहीं सीखा, इसके बारे में भी मुझे बताइए। मेरे को पहले मुश्किल लग रहा था, मगर अब जरा आसान हो रहा है। ये आज के दर्स से जरा जरा आसानी हुई, माशाल्लाह मगर मैं माशाल्लाह। प्रैक्टिस कर रही हूँ ये, क्योंकि जैसा एक वर्ड से कई मतलब निकलते हैं, तो वैसा मैं लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह खुदा से दुआ है कि आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो आपने शुरू किया है माशाल्लाह, और आपके अंदर खास तौर पे मैं ये देखता हूँ कि क्योंकि आपकी उर्दू की अच्छी सेंस है, उर्दू के अंदर बहुत अच्छी आपकी वो है, रीच है, आप पकड़ लेती हैं। जैसे अभी आपने कसौना को पकड़ा है ना, कसौना और कसा, राइट। तो ये हर एक के समझ में नहीं आती है बात, ठीक है। वो रूट लेटर्स को ढूंढते रहते हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह रूट लेटर्स ढूंढने में मसला नहीं होगा। ओके, इंशाल्लाह। वेल जी डन माशा। शुक्रिया। जी, और कोई? और वो कुरान माशाल्लाह। ट्रांसलेशन बहुत अच्छा रहा। जी माशाल्लाह। वो पता चलता है कि कौन सा जर है और मुजाफ मुजाफ इलैह, जी और सो माशाल्लाह उसमें स्पॉट स्पॉट कर सकते हैं माशाल्लाह, कि वेरी गुड। आपको जी मालूम है ना, आपने इंट्रोडक्शन लेसन देखा है ना सबने? जी वेरी गुड। तो इंट्रोडक्शन लेटर में हमने यही बताया, लेटर नहीं सॉरी, इंट्रोडक्शन लेसन में हमने यही बताया कि ये कोर्स आपको इस काबिल बनाएगा कि आप कुरान मजीद को जब पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक हम्म है, वी आर नॉट गोइंग टू मेक यू ग्रामेरियंस, आपको सरफी और नहवी नहीं बनाएंगे हम, आपको जो है हम डिक्शनरी में ज्यादा डिटेल और डेप्थ में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आपको हम इस काबिल बनाएंगे कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ ग्रेट डील आउट ऑफ द कुरान। देखिए, मैं लोगों को क्यों क्यों बनाया पता है मैंने आपको, मैं अभी बात निकली है तो बताऊं, आप लोगों से बात करूं। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर्स को देखता हूँ, वो हमेशा से कुरान पढ़ते हैं,
लेकिन उनको नहीं पता कि हाजा तो पता है उनको, जालिका नहीं पता, उलाई का नहीं पता, तिल का नहीं पता, राइट, हेया उनको नहीं मालूम, हुआ उनको नहीं मालूम। अब अगर यही नहीं मालूम तो इतने साल से कुरान पढ़ रहे हैं तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता है उसमें से, राइट। अब इस स्टूडेंट को इस काबिल करना कि वो कुरान मजीद को जब पढ़ रहा हो तो उसको अच्छा खासा समझ में आ रहा हो, आइदर बिकॉज ड्यू टू देयर प्रीवियस नॉलेज इन द वोकेबुलरी और इन देयर बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस नॉलेज इन द कुरान ग्रामर, राइट। तो दोनों हवालों से वो उसको सीख सके, माशाल्लाह। थैंक यू सिस्टर साबरा करीम। एनीवन एल्स? जी सिस्टर ज़ैनब, यू वर सेइंग समथिंग? Yes, Alhamdulillah, it was good. It was a good repetition for me. I also had one question about kunna. It means we are, but in the translation, when we were doing the surah, ma kunna, that was we were. No, no, not we were. So So the can you explain that, please? right. So the word kana is very flexible. Sometimes it can refer to the past, sometimes it can refer to the future. This is especially about kana and akhawat kana. Okay. Okay, they all have the same amal. You know about their amal, af'al naqisa, right? Yeah. Af'al naqisa. So these are af'al naqisa. They have very flexible meanings, right? तो जैसे काना है, ये था में के लिए भी होता है और है के लिए भी होता है. Okay, and amal for this you know it already, so I don't need to discuss that. Otherwise ग्रामर जब आएगी बीच में तो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा कि काना का अमल क्या होता है और अखवात काना का अमल क्या होता है. अमल जो भी होता है, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं उसको तो आपको समझ में क्या आता है. असल हमारा जो मसला है वो ये है इस लेसन में. जी आप बताइए, मजीद कुछ बताइए प्लीज. For me? Oh, You want to elaborate on something else? no, thank you. चले माशाल्लाह, thank you very much. Inshallah. So you said it was a repetition for you. Yeah, it was. Yeah, Have most you of the lessons. most of my lessons? Okay, so you have done Arabic grammar in detail before. Yeah, I have. Yeah, the Medina book. Have you seen examples from the Quran as well in that? Yeah, yeah, I have. Okay. So what do you expect? Like I want Mhm. I want to go a bit further in my education, so this is kind of slow. Yeah, it's a little I can slow feel for that. me. I Yeah. can feel that from your side that this is repetition from you and from Sister Shamim. ठीक है, आप दोनों का लेवल जो है वो ज्यादा है, यानी आप लोगों ने ज्यादा टाइम दिया है इसको, इन चीजों को आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया है इसके अंदर. ठीक है, और इसके बाद जो है सिस्टर सईदा, उन्होंने भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर, बहुत अच्छा आता है उनको. नहीं कि हाँ वो जैसा बेबी रो रही थी. नहीं, आई थिंक दिस आइडिया, ये जिस तरीके से आप सिखा रहे हैं ना, ये ज्यादा अच्छा तरीका है. इसको हम सब मतलब ना क्या ये उर्दू में नहीं समझ पाता कैसे क्या, लेकिन नाउन प्रोनाउन और वर्ब्स को ज्यादा पहचान सकते हैं हम, और ज्यादा आसान पड़ता है जैसे सिर्फ ग्रामर सीखने से. जी जी जी. देखिए अब एक्चुअली हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास हर स्टूडेंट एक डिफरेंट टाइप का स्टूडेंट है. ठीक है, सिस्टर जैनब जो स्वीडन से हैं, उनकी ग्रामर, उन्होंने ग्रामर काफी पढ़ी हुई है पहले से. ठीक है, और वो चाहती हैं कि इंग्लिश में हो और डिटेल में हो और इन डेप्थ हो, सारे अबवाब, सारी ग्रामर, सब कुछ मैं इनको बताता रहूं. फिर जो सिस्टर शमीम हमीर हैं, उनकी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अरबिक के हवाले से, बहुत इन्वेस्ट किया उन्होंने भी अपना टाइम इसके अंदर, और वो भी चाहती हैं कि इसको इंग्लिश में किया जाए. अब ये दो लोग ये हो गए. ठीक है, अब सिस्टर जैनब फ्रॉम द यूएस जो हैं, वो कहती हैं कि मेरी उर्दू में अच्छी वो है, ग्रास्प है, मेरी मेरी अच्छी पकड़ है उर्दू के अंदर, और मैं चाहती हूँ उर्दू में इसको करूँ, लेकिन मैं हूँ बेसिक लेवल पे, राइट. अब सिस्टर सईदा मुखी जो है वो कहती हैं कि मैंने तो अरबिक पढ़ा है और मैं खुद भी जानता हूँ कि वो माशाल्लाह पढ़ रही हैं, उन्होंने भी अच्छा इन्वेस्ट किया है, उनको भी जो है इंग्लिश में एक वो चाहिए. इसी तरह सिस्टर सुकैना जो है, उनका भी यही है कि शी वांट्स दैट टू बी डन यानी एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश. आई नो दैट. लेकिन बात यह है कि कम्युनिकेशन लेवल के हवाले से मेरे भी कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी मैं दो जबानों को जल्दी स्विच नहीं कर पा रहा होता हूँ. खासतौर पे जब ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो काफी कॉम्प्लेक्स मसला होता है, फिर उसके दरमियान दो जबानें बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मेरे अपने भी वो है कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ, जिनको मुझे निपटना होता है इसके अंदर. मौलाना अगर आप एक ही जबान में इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं तो मैं समझती हूँ, मगर मैं लिख लेती हूँ उर्दू में, मुझे लिख लेने में उर्दू में बहुत अच्छा लगता. तो आप इंग्लिश में कंटिन्यू, अगर मेजॉरिटी इंग्लिश वांट्स देन यू कैन कंटिन्यू इन इंग्लिश. जी जी जी. देखिए ना, हमने जो टेक्स्ट, जी कहिए. कारिजा मैं कह रही थी, आप इंग्लिश एंड उर्दू दोनों कर रहे हैं, दोनों अच्छा रहता है. जैसे जितना आप कोशिश कर सकते हैं, तो कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश में जैसे सुम्मा है, कुछ इंग्लिश में कुछ उर्दू में बेटर मेक सेंस करते हैं ना, क्योंकि दोनों ही जबान हम बोलते हैं ना. जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल. बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन करते हैं. बहुत सारी बातें जो समझ नहीं आ रही थी वो समझने आने लगती है अब. थोड़ा थोड़ा स्लो एंड स्टेडी, मेरे थोड़ी मैं वो स्लो हूँ मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा ग्रास्प करा देते हैं. जज़ाकल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. और
देखें इसी वजह से मैंने जो ट्रांसलेशन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही रखी है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इज बिट इजियर व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेट फ्रॉम अरबिक, ठीक है। अरबिक से जब ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन होता है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, वर्ड्स को नहीं। वर्ड्स के मामले में तो इंग्लिश इज बिल्कुल बिल्कुल फारिग है इंग्लिश, यानी मैं क्या कहूँ आपको, अल्फाज की जो चॉइस है ना वो बहुत कम है इंग्लिश में एज कम्पेयर टू अरबिक और उर्दू, ठीक है, यानी लफ्ज का मफहूम समझाने के लिए उर्दू ज्यादा बेहतर है, लेकिन जुमले का जो वो है ना कॉम्पोजिशन, उसको समझाने में इंग्लिश ज्यादा बेहतर रहती है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये हर किसी के लिए जो है ना बेनिफिशियल हो इंशाल्लाह। और आज का लेसन जो हमने किया, तो आपने अंदाजा कर लिया होगा कि कुरान करीम में से यानी हम तकरीबन कितनी आयतें आज हमने पढ़ी, तो देखेंगे आयत नंबर कहाँ तक हम आए थे। We stopped in Ya'malun, so we'll start from Al-Ma'idah 67. No, I'm asking about today's lesson. Yeah. Lesson we did till I thought you were asking about Ahsan al-Khaliqin. Yes, we did till आयत नंबर 14, ठीक है, आयत नंबर 14 तक हमने किया। तो आपने नोट किया होगा कि चीजें आपके लिए सॉरी, मुझे लगता है 18 तक हमने किया। 18 था, 18 था 18 जी। नहीं 18 नहीं किया हमने। लकादिरून अला ज़िहाबिन नहीं किया है हमने, अला ज़िहाबिन लकादिरून ये तो हमने नहीं किया। खैर मसला नहीं है, बहरहाल 14 हो या 15 हो या 17 हो, बहरहाल हमने एक हिस्सा किया कुरान मजीद का आज, जो कि आपने इंशाल्लाह समझा और मैंने भी समझा। मैंने क्या समझा कि आप लोगों के साथ जब मैंने वो दुरूस किए थे, पहले लेसन जो हमने किए थे, तो उसमें से आप लोगों को कितना समझ में आया, राइट, और मजीद कितना आप लोगों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये भी देखना होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में भी आए। ऐसा नहीं है कि हम आए हमने लेक्चर डिलीवर किया, किसी को समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो भी ठीक है और हम जा रहे हैं, इस तरह इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर है कुरान मजीद है, दुनिया की सबसे एलिक्वेंट किताब है, और हम इसके माने और मफहूम को कमा कहूँ समझाना जो है वो भी कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। अगर आसान होता ना तो अब तक बहुत सारे लोग कर चुके होते, लेकिन ये आसान नहीं है। इस वजह यानी इसको समझाना आसान नहीं है, किताब तो आसान है, लैंग्वेज को समझाना जरा मुश्किल है। किताब तो बहुत आसान है, अगर अरबिक टू इंग्लिश वर्ड टू वर्ड अगर हम लेके चलें तो बहुत आसान है, अगर ग्रामर को हम बीच में डालें ही नहीं, ठीक है। लेकिन ग्रामर को लाना पड़ता है, क्योंकि ग्रामर के बगैर सेंटेंस का सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो इस वजह से ग्रामर को बीच में लाना पड़ता है, और ग्रामर जो डिजाइन की गई है वो जिस जिस तरीके से पढ़ाई जाती है वो जरा एक अलग तरीका है। चलें, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अब हम शुरुआत करते हैं। ओ माय गॉड, 8 मिनट ऊपर ले गया मैं, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। जी सिस्टर ज़ैनब, यू टोल्ड मी अबाउट सूरतुल माइदा, व्हिच आयत इट वाज? 67. We start on 67. 67, अल माइदा 67। बंद कर दो बेटा।